So today we are going to discuss about register and slang language. In previous class we discussed Australian English variety, and in today's class we will discuss register and slang language. In pre-reading we have questions. We have questions like what is register in linguistics? First of all, what is register in linguistics? Can anybody answer? So the first question is, do we use the same type of language every time? No, we can't. We don't use the same type of language every time because we live in the community. We live in the we live in the same community, so we can't. So we don't use in the same language because we have in the community we have different situations. We have different conditions. So we have different peoples. So through we see the condition or we see the type of people that which type of people the language and the people speak. So according to that we will speak on the situation. We will speak on that condition. According to that we are using that language. So we are not people almost the same language. Very good. Register is a variety of language used in different social situations. For example, English, this language is used differently in different fields like law, religion, science, medical, sports, teaching. Yes, very good. लैंग्वेज जेका कंहिं स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम में यूज़ कई वञे या कंहिं स्पेसिफिक प्रोफेशन जे लाइ वोकैबुलरी यूज़ कई वञे। या हाणे लिंग्विस्टिक्स जा काफ़ी सारा टर्म्स आहिनि जेके बिज़नेस डिपार्टमेंट सां मैच न आहिनि। उहा असां ॻाल्हाईंदासीं त बिज़नेस डिपार्टमेंट वारनि खे सम्झ न ईंदा ऐं बिज़नेस डिपार्टमेंट वारा अगरि असां सां ॻाल्हाईंदा त उन्हनि जा कुझु टर्म्स आहिनि जेके असांखे कोन सम्झंदा मीन्स स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। Yes. Second question is, do we use the same type of language in every situation? छा असां हर सिचुएशन में हिकड़ी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहियूं या असां डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ॿोली ॻाल्हाईंदा आहियूं? प्लेसिस सभु अलॻि हूंदा आहिनि। लैंग्वेज त असां हिकिड़ी ॻाल्हाईंदा आहियूं पर उनजा तरीक़ा मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि। असां जेको फैमिली में ॻाल्हाईंदा आहियूं जहिड़े हिसाब सां ॻाल्हाईंदा आहियूं, कहिड़ो स्लैंग वर्ड था यूज़ कयूं, कहिड़ो सभु फॉर्मल कहिड़ो इनफॉर्मल यूज़ था कयूं, उहो साॻियो सभु फ्रेंड्स में न यूज़ कंदा। फ्रेंड्स में असां कम्पलीटली डिफरेंट ॻाल्हाईंदा आहियूं जेका असांजी कोड वर्डिंग हूंदी आहे या हिक ॿिए खे असांजी अंडरस्टैंडिंग थींदी आहे। ऐं जॉब प्लेसिस ते असांजी कम्पलीटली वरी डिफरेंट लैंग्वेज हूंदी आहे जेका थोरी फॉर्मल हूंदी आहे। अहिड़े हिसाब सां असां हिकिड़ी लैंग्वेज जा काफ़ी सारा टाइप्स असां पंहिंजे डोमेन जे हिसाब सां ॻाल्हाए। जैसे सिचुएशन वाइज जेको आहे पाण हिनखे यूज़ कंदा आहियूं लैंग्वेज खे, जीअं मतिलबु जीअं त जहिड़ो माहौल हुजे उन माहौल जे हिसाब सां ई पाण ॻाल्हाइणो आहे। त जीअं सैड माहौल आहे किथे, मतिलबु त माण्हू जे में ॾुख जो आहे माहौल, उते पाण उन हिसाब सां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं फ्रेंड्स आहिनि त उते फ्रेंड्स जी सिचुएशन जे मुताबिक़ जीअं पाण लैंग्वेज ओपनली यूज़ कंदा आहियूं उहे यूज़ कंदासीं। पेरेंट्स आहिनि त उन्हनि सां उन हिसाब सां यूज़ कंदासीं। मतलब सिचुएशन बेस्ड जीअं पाण यूज़ कंदा आहियूं, जीअं क्लास में टीचर सां पाण अदब लैंग्वेज यूज़ कंदा आहियूं ऐं ॿार फ्रेंड सां फ्रेंडली हूंदा आहियूं। मतलब ये सिचुएशन बेस्ड जेको आहे उन ते बेस थियल आहे, त हुन मुताबिक़ ई पाण लैंग्वेज यूज़ करणी आहे जहिड़ी सिचुएशन हुजे। थैंक यू। Do we use the same type of language with everybody in the society? What is your opinion in this regard?
नथा करे सघूं। माण्हू खे ॾिसी करे पोइ उन हिसाब सां पाण खे ॻाल्हाइणो पवंदो आहे। जीअं त पेरेंट्स अॻियां पाण ॿी लैंग्वेज ॻाल्हाईंदासीं दोस्तनि जे अॻियां, थोरो उन सिचुएशन खे ॾिसी माण्हू खे ॾिसी पोइ ॻाल्हाईंदासीं। टीचर जे अॻियां अञा ॿिए तरीक़े सां ॻाल्हाईंदासीं। असां सोसाइटी में ॻाल्हाईंदा आहियूं त असां सिचुएशन ॾिसी पोइ ॻाल्हाईंदा आहियूं। असां सेम ई मतिलबु लैंग्वेज ते यूज़ न ई कंदा। Now we vary our language from one situation to another situation. This is the very fundamental principle in register, that we use our language according to the situation. If we see in formal language, if there is a teacher that is more respected to us, if he is very much venerated in front of us, then we use the language differently with him. Similarly, if there is a bosom friend, then we use different language with the friend also. असां सिचुएशन मूजिब मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो लैंग्वेज ॻाल्हाईंदा आहियूं। लैंग्वेज डिफर कंदी आहे असांजी अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। लैंग्वेज जो कोड जेको आहे उहो चेंज थी वेंदो आहे समटाइम्स। मिसाल असां जेकॾहिं पंहिंजे फादर या पंहिंजे पेरेंट्स सां ॻाल्हायूं था त वी डेफिनेटली यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज। असां मौदबाना लैंग्वेज हुननि जे साम्हूं ॻाल्हाईंदासीं। जेकॾहिं असां पंहिंजे मिसाल वठूं कंहिं अहिड़े भाउ सां जंहिंसां असांजी अटैचमेंट ॾाढी सुठी आहे त डेफिनेटली असांजी जेकी टून हूंदी या असांजो जेको लैंग्वेज हूंदी उहा डिफर कंदी। आवर लैंग्वेज वुड डिफर डेफिनेटली। सो वी वेरी आवर लैंग्वेज फ्रॉम वन सिचुएशन टू another situation. In linguistics, the register is defined as the way a speaker uses language differently in different circumstances. Linguistics म्हणजे register मतलब इहो आहे त जेको स्पीकर आहे उहो स्पीकर मुख़्तलिफ़ जेके सर्कमस्टेंसिस आहिनि उन्हनि मुख़्तलिफ़ सर्कमस्टेंसिस में लैंग्वेज खे मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां ॻाल्हाए थो, उनखे असां रजिस्टर चवंदा आहियूं। मिसाल तौरु असां वटि सर्कमस्टेंसिस डिफरेंस हूंदा आहिनि। असां ॾिसंदा आहियूं त लॉ में जेकॾहिं वञूं था कोर्ट में जेके वकील हूंदा आहिनि जॾहिं केस विढ़ंदा आहिनि उहे जेकी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहिनि उहा ॿोली डिफर कंदी आहे। असां साॻी तरीक़े सां जेकॾहिं सोसाइटी में अचूं, सोसाइटी में जेकॾहिं माण्हू को पब्लिक स्पीकिंग में ॻाल्हाए पियो त उते हू डिफरेंटली ॻाल्हाईंदो। असां जेकॾहिं ॾिसूं त असां कंहिं फ्रेंडली सर्कल में वेठा आहियूं उते असांजो रजिस्टर चेंज हूंदो। द लैंग्वेज वी यूज़ देयर वुड बी डिफरेंट and the language would we use in the public speaking would also be different. So register is what is the way a speaker uses language differently in different circumstances. Similarly, linguistics varieties that are linked to occupations, professions or topics, they have been termed as registers. माना जेके लिंग्विस्टिक्स जेके भी वैराइटीज़ आहिनि असां वटि ऑक्यूपेशन सां रिलेटेड बिजनेस एरिया में या असां वञी ॾिसूं त मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा मुख़्तलिफ़ ऑक्यूपेशन्स हूंदा आहिनि प्रोफेशन सां रिलेटेड, त दे हैव बीन टर्म्ड रजिस्टर्स। द रजिस्टर ऑफ लॉ फॉर एग्जांपल वी हैव हियर is different from the register of medicine, which in turn is different from the language of engineering also, and so on. Now we see the law, the register and the discourse of law is different from the discourse of medicine or from the register of medicine. जेका language, the language of law जेका हूंदी आहे उहा different हूंदी आहे मेडिसिन जी लैंग्वेज में। तव्हां वटि लाइव एग्जांपल्स हूंदा, यू माइट हैव लाइव एग्जांपल्स बिकॉज यू हैव सोशल बैकग्राउंड। त जेकी लॉ जी ॿोली हूंदी आहे उहा डिफर कंदी आहे मेडिसिन जी लैंग्वेज खां। मेडिसिन लैंग्वेज जा कुझु लफ़्ज़ अहिड़ा आहिनि जेके असां कंप्लीटली उहे लॉ जी लैंग्वेज में नाहिनि ॻाल्हाया वेंदा। साॻी तरीक़े सां असीं मिसाल वठूं, इंजीनियरिंग जी लैंग्वेज डेफिनेटली टेक्निकल लैंग्वेज हूंदी आहे, त देयर रजिस्टर्स आर डिफरेंट।
So registers are usually characterized by vocabulary difference, or by the use of particular words, or by the use of particular sense. That is what the register is. Registers are simply a special case of particular kind of language being produced by the social situation. माना जेकॾहिं सोसाइटी में जेकी बि सिचुएशन्स थियनि थियूं उते को रजिस्टर ॻाल्हायो वञे थो उनखे असां जेको आहे सो रजिस्टर चवंदा आहियूं. त इट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट that register differs from situation to situation. मुख्तलिफ सिचुएशन में असां मुख्तलिफ लैंग्वेज ॻाल्हाईंदा आहियूं. द लैंग्वेज वी यूज इन डिफरेंट सिचुएशन दैट इज कॉल्ड द रजिस्टर. नाउ लेट अस सी मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल असां जेकॾहिं हिकिड़ो ॿियो मिसाल वठूं था. फॉर्मली there are different linguistic writers or different linguistics authors. They say there are two registers, that is formal and informal. They are right, but there are others also. Some vary, some oppose them, that there are different 5 registers. Let us have another examples regarding register, the language that is used in different situation. For example, there is a queen of England, and you have got a chance to meet with the queen. Now you are going to meet with the queen. On that time, in that situation, which language do you use? Will you use this language, that hey dude, what's up? No, you will not use this kind of language with the Queen of England. You might be using some sort of very formal language there, because she is having a high caliber. And at that time, what kind of language you would be using? That would be that would be register. For example, you would say there, it's an honor to meet you, your highness. And he jeko asa register galaya, the language that we used there is called register. असां जेकी लैंग्वेज उते ॻाल्हाई आहे उते उनखे असां चवंदा आहियूं रजिस्टर सिंपली. हाणे इहा साॻी जेकॾहिं असां ॾिसूं, इहा साॻी ॿोली असां दोस्त सां नथा ॻाल्हाए सघूं. दोस्त सां असां जेको आहे कोन ॻाल्हाईंदा आहियूं, न आहियूं ॻाल्हाईंदा. वी डू नॉट यूज़ द सेम लैंग्वेज, द सेम रजिस्टर विद द फ्रेंड. असां उते कोन को दोस्त हुजे उते असां उनखे डायरेक्ट चवंदा आहियूं हे ड्यूड. असां उते ड्यूड जहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं दोस्तनि सां. It's honor to meet you, your highness. इहो त अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ या अहिड़े क़िस्म जी ॿोली असां दोस्तनि सां न आहियूं ॻाल्हाईंदा. We do not use such type of language with our friends. Moreover, there are different examples we have. So the register is what? It is the language that is spoken or that is written in different situation. In every situation where you encounter with people, if there are kinds of people, there are kinds of types of people, you use different types of language with them. Now in writing, we say academic writings, your language would differ. If you are writing a friendly letter to the friend, that the writing of that language would be definitely different. If you are writing a letter to the teacher, the writing of that language would definitely be different. There is genre that you will use there. So it varies person to person and any situation. Now moving to the next slide. So in linguistics, the register would be different according to the situation. For example, think about the words you choose, your tone of voice, even your body language. You probably behave very differently chatting with friends than you would at a formal dinner party or during a job interview.
These variations in formality, also called stylistic variation, are known as registers in linguistics. So see, there are different examples presented here. So we definitely behave differently when we are with the friend, and when we are having a dinner at party or somewhere that is a formal situation. During the job interview, your tone, your words, and even your body language would be different. Sometimes by chance, when you meet with your friend after a long time, you would use the language that would be different there. So this is also the register that we use a variety of language according to the situation, according to the context. That is the register. For example, there is a sentence, if you meet with the stranger, you are in the party, and so you're discussing your body language, your tone of voice, and your words, your choice of words would definitely be different in different situation. So I was speaking and presenting an example here. So you are in the party. Beside you, there is a stranger sitting. So this is the time of dinner. You are having a dinner. So you want to, we can say, turn to the stranger and say him that, pass me the salt. Pass me the salt samra diyar ta unage उन खां कुछ का शइ वठो पिया. हाणे स्ट्रेंजर सां तव्हां जेको इस्तेमालु कंदो, स्ट्रेंजर सां तव्हां इस्तेमालु कंदो, वुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट. पर हुते जेकॾहिं फॉर्मल आहे ऐं जेकॾहिं फॉर्मल लैंग्वेज आहे, त असां हुते छा इस्तेमालु कंदासीं, द लैंग्वेज. साॻी जॻह ते जेकॾहिं स्ट्रेंजर जी जॻह ते असां जेको दोस्त हुजे हा, त उनखे असां छा चऊं हा, उनखे असां चऊं हा पास मी द सॉल्ट डायरेक्टली, असां इहो लफ़्ज़ चऊं हा. पर हिते स्ट्रेंजर आहे, स्ट्रेंजर जे लाइ असां इस्तेमालु कहिड़ी ॿोली पिया कयूं, स्ट्रेंजर जे लाइ असां फॉर्मल लैंग्वेज पिया इस्तेमालु कयूं. Perhaps he may get, we can say, angry, may get angry upon the tune or upon the choice of words that we are using. So the hutte stranger je lai, the language that we use is, would you please pass me the salt. This is what we can say difference between speaking with the friends and speaking with the stranger. So with the friend we say pass me the salt. Sometimes ये भी हुंदो आहे त असांखे जिथे असां कावड़ में बि चई छॾींदा आहियूं, त कावड़ असांखे ॿियनि अजनबीनि त असीं नथा कढी सघूं. असां उन्हनि सां कढी सघूं था जिते असांखे जेको आहे जंहिंसां असांजी फैमिलियरिटी हुजे, वाक़फ़ियत हुजे. सो कावड़ में बि असां चई सघूं था, त असांजी टून चेंज हूंदी आहे, पास मी द साल्ट. So there is a difference of language that we use, that is called the register. साॻी तरीक़े सां असां जेकॾहिं मिसाल वठूं, ॿियो एग्जाम्पल हियर, child and father is more formal than kid and dad. असां फॉर्मली जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे इस्तेमालु कंदा आहियूं, चाइल्ड ऐं फादर. Child is the word that we are using formally here on behalf of kid, father on behalf of dad. असां जेकॾहिं रिटन लैंग्वेज में अचूं या कंहिं बि फॉर्मल जॻह ते असां जेको आहे इहे लफ़्ज़ लिखंदा आहियूं, फादर या चाइल्ड on behalf of kid and dad. त इहे जेके एग्जाम्पल्स आहिनि, these examples are showing that they are displaying and expressing that language differs according to the situation and according to the context. So that is what the register is.
such variation is determined by factors. Our variations कुछ factors हैं असां कुछ, let us see here social occasions. कुछ social occasions हो जान कि पार्टी में हले हो, कि दावत में हले हो, कि शादी में हले हो. Context थी सके तो, context differ थी सके तो, purpose and audience differ करे सके थी. Audience असांजी अक्सर different हूंदी आहे. ॿुधण वारो असांजो चेंज हूंदो आहे. Sometimes वॾो भाउ हूंदो आहे, sometimes नंढो भाउ हूंदो आहे, sometimes पाड़े वारा हूंदा आहिनि, sometimes असांजा दोस्त हूंदा आहिनि. So these are the factors. So these are the factors that we have to keep in the mind. 5 language registers describes the various style of language available for writing or speaking. There are means 5 we see language registers which discuss or which describes the style of language available for writing or speaking. The language is classified into 5 categories called language register. हाणे हिननि कहिड़ी 5 अहिड़ी categories आहिनि जंहिंमें असां language खे मर्तब कयो आहे. One is frozen, and then formal, and then consultative, then casual, then intimate. ऐं ये 5 जेके language forms आहिनि असां इहे खणी अचूं जेके असां differently use कंदा आहियूं in 5 occasions में. So असां previous slide में discuss कयो, there are different factors, social occasions and context and purpose. त हिते असां ॾिसंदासीं न frozen, formal, consultative and casual and intimate. These languages are different, जेके असां differently use कंदा आहियूं. We determine which register to use based on who is in our audience, what our topic is, and the purpose of our communication. असां छा कंदा आहियूं, language जेको असांजो ऑडियंस हूंदो आहे उन मुताबिक़ ऐं असांजो जेको टॉपिक हूंदो आहे असांजो जेको पर्पस हूंदो आहे उन मुताबिक़ ॻाल्हाईंदा आहियूं. ऐं चवंदा आहिनि न, what you say and how you say it will in turn be governed by the situation and who you are talking to. जंहिंसां ॻाल्हायो पिया तव्हां. त माना इन जो चवण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हांजो ऑडियंस, तव्हांजो टॉपिक, तव्हांजो पर्पस ऐं तव्हां जंहिंसां ॻाल्हायो पिया उहे तक़रीबन जेको आहे सो बेस कंदा इन्हनि शयुनि ते. हाणे असां चऊं था इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज रजिस्टर सो वी डू नॉट ऑफेंड अदर्स. ऐं हिकिड़ो त इहो पर एग्ज़ाम्पल आहे त असांजे लाइ ज़रूरी आहे त लैंग्वेज जेकी आहे असां उहा इस्तेमालु कयूं जंहिंसां कंहिं ॿिए खे तकलीफ़ न पहुचे या कंहिं ॿिए खे असां रंज न ॾियूं. And that is necessary for us to use the language. For educated person, being the educated, we should use the language that does not offend anyone. Registers are used in all forms of communication, including written and spoken. Depending on grammar, syntax, and tone, the register may be extremely rigid or very intimate. मुख्तलिफ registers थी सघनि था. Rigid थी सघे थो, intimate थी सघे थो. बाबा जो पुट सां ॻाल्हाइण ऐं असांजो कंहिंसां जंहिंसां असांजी वेझड़ाई बि घणी आहे उन सां ॻाल्हाइण, त उते असां it is depending upon the grammar and syntax in the tone. Moving to the next slide. Types of linguistic registers. Some linguistics say there are just 2 types of register, that is formal and informal register. The language that we use formally and informally. That isn't correct, that is not correct, incorrect. But it is an oversimplification. Instead, most who study language say there are 5 distinct registers. 5 मुख्तलिफ registers आहिनि जेके असां पुठियां डिस्कस कया, frozen, consultative and intimate. Now we will see frozen. And frozen register कहिड़ो आहे? This form is sometimes called the static register because it refers to historic language or communication that is intended to remain unchanged like a constitution or prayer.
असां ॾिसंदासीं त ही जेको फ्रोज़न पार्ट आहे, this part this is also called static register. This refers this directly goes back to the historical language or communication that is used in the traditional, we can say, sense, that remain unchanged. माना असां जेके ॾिसूं तारीख़ में जेकी ॿोली जेकी इस्तेमालु थियल आहे, जेकी कॉन्स्टिट्यूशन में जेकी ॿोलियूं इस्तेमालु थियल आहिनि, असांजी जेकी प्रेयर्स में ॿोलियूं इस्तेमालु थियनि उहे अनचेंज्ड आहिनि. They are unchangeable. You see the Bible, the language that is used in the Bible, that is unchangeable. It is retained and it is not changed. The United States Constitution, constitutions are same. The language of constitution is not different. The Bhagavad Gita, Romeo and Juliet, poetry and laws. So this is what the frozen form, the language that is historic and the language that is not changed. That is written and that is the same language there. The constitution cannot be changed. Sometimes we see there are constitutions. जीअं लिखियल आहिनि उहे लिखियल आहिनि, उन्हनि जी ॿोली चेंज न आहे थी, त उनखे असां चवंदा आहियूं फ्रोज़न. असां मुख़्तलिफ़ मिसाल हिते आहिनि. Formal चाहे less rigid but still constrained. The formal register is used in professional, academic, or legal setting where communication is expected to be respectful, uninterrupted, and restrained. And a formal में चाहे, formal is a register that is used in professional and academic or legal setting where our communication is very much respectful. There is no intervention, there is no interruption there, and not anything that disturbs. So in formal language, we use, with the help of, we can say, respective manner, we use that language. Slang is never used there. Contractions are rare. असां short forms घटि इस्तेमाल कंदा आहियूं formal language में. जॾहिं बि यादि रखो, when you are using in English and in the formal situation, formal जेकॾहिं writing हुजे, academic writing हुजे या essay हुजे या कुझु बि हुजे, त उते तव्हां contractions या short forms इस्तेमाल न आहियो कंदा. Slang is never used. Formal language में slang न आहे इस्तेमाल थींदो. असां मिसाल वठूं interviews मंझि, असां मिसाल वठूं business presentation में, त उते जेको आहे असां ॾाढो फॉर्मली ॻाल्हाईंदा आहियूं, रिस्पेक्टिव मैनर में ॻाल्हाईंदा आहियूं. असां एकेडमिक लैंग्वेज इन क्लासरूम में जेका लैंग्वेज इस्तेमालु कई वेंदी आहे, उहा ॿाहिरी लैंग्वेज जेकी हूंदी आहे, आउटसाइड क्लास जेकी हूंदी आहे, आउटसाइड लैंग्वेज जेकी हूंदी आहे, उहा डिफरेंट हूंदी आहे. इंस्ट्रक्शंस, मिनी लेसन जी जेकी लैंग्वेज असां इस्तेमालु कंदा आहियूं, पब्लिक स्पीकिंग में जेका लैंग्वेज इस्तेमालु कंदा आहियूं, ॿाहिरि जिते जलसा थींदा आहिनि या जिते असांजो जेको आहे किथे किथे माण्हू पार्टी जा कन्वेंशन्स थींदा आहिनि, उते माण्हू ॻाल्हाईंदा आहिनि, त उते जेको आहे लैंग्वेज डिफर कंदी आहे, फॉर्मली हूंदी आहे. That type is a formal type. Moving to the next, consultative. People use this register often in conversation when they are speaking with someone who has specialized knowledge or who is offering advice. Tone is often respectful, courtesy title, but maybe more casual if the relation is long-standing or friendly. A family doctor. Example, talking to a boss, supervisor, teacher, lawyer, doctor, counselor, asking for assistance, used to ask and answer questions. And consultative language कहिड़ी हूंदी आहे? Consultative language असां अक्सर उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं जेके माण्हू हाई लेवल जा या ईअं खणी अचे जिन माण्हुनि वटि घणी नॉलेज हूंदी आहे, जेका असां अक्सर एडवाइस वठंदा रहंदा आहियूं. असांजा कुझु हिकिड़ा आइडियल माण्हू हूंदा आहिनि ऐं के आइडियल माण्हू हूंदा आहिनि जिन सां असां कंसल्टेटिव लैंग्वेज ॻाल्हाईंदा आहियूं. जॾहिं असांखे को कंफ्यूजन हूंदो आहे या कंहिं चीज़ ते परेशान हूंदा आहियूं त असां उन्हनि खां सलाह मशवरो वठंदा आहियूं. त असांजो सलाह मशवरो वठणु वक़्तु असांजी जेकी लैंग्वेज हूंदी आहे ॾाढी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज हूंदी आहे. ईअं न आहे त असां उन सां जेको आहे सो हिकिड़े क़िस्म जो स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमालु कयूं हुते, या हिकिड़े क़िस्म जी अहिड़ी लैंग्वेज इस्तेमालु कयूं जेका उते ऑफेंड करे.
त कंसल्टेटिव लैंग्वेज जेकी आहे असां जंहिं माण्हू वटि स्पेशलाइज़ नॉलेज हूंदी आहे या जेके काउंसलर्स जेके हूंदा आहिनि अक्सर पंहिंजे क्लाइंट खे हिकिड़े तरीक़े सां हिकिड़े रिस्पेक्ट मैनर में उते उनखे ॾाढो मोटिवेट कंदा आहिनि। असां ॾिसंदा आहियूं असांजा टीचर्स अक्सर अहिड़ा आइडियल टीचर हूंदा आहिनि जिन खां असां पंहिंजे कैरियर जी सलाह वठंदा आहियूं त असां मूंखे हाणे मैट्रिक इंटर करिणो आहे ऐं कहिड़े शोबे में वञा या यूनिवर्सिटी में मूंखे कहिड़ो शोबो वठणु घुरिजे। जिन वटि घणी नॉलेज हूंदी आहे उहे असांखे मुख़्तलिफ़ चॉइसिस ॾींदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ सलाहूं ॾींदा आहिनि। त दिस इज़ नॉट कंसल्टेटिव रजिस्टर, जिते असां डॉक्टर्स खां असां समटाइम्स सलाह वठंदा आहियूं, असांखे को बीमारी हूंदी आहे, का परेशानी हूंदी आहे, डिप्रेशन में हूंदा आहियूं या स्ट्रेस में हूंदा आहियूं, त उन्हनि खां पुछंदा आहियूं व्हाई डज दिस हैपन। साॻी तरीक़े सां लॉयर खां मुख़्तलिफ़ माण्हू सलाह वठी सघनि था, यार फलाणो केस जेको आहे छो कीअं आहे, या फलाणे केस जे बारे में फलाणो आर्टिकल, फलाणो जेको कॉन्स्टिट्यूशन आहे, कानून आहे। सो दीज आर व्हाट दिस इज कंसल्टेटिव, जिते तव्हां सलाह मशवरो वठंदा आहियो किन माण्हुनि खां कि सलाह मशवरे वठण जे लाइ कहिड़ा बि माण्हू थी सघनि था जिन खे तव्हां मोतबर सम्झो था या जिन खे तव्हां सम्झो था त दे आर एलिजिबल या दे आर कैपेबल टू गिव अस द बेस्ट आंसर, डिजायरेबल आंसर। त उते तव्हां उहे माण्हू केर बि, तव्हांजी मदर थी सघे थी, तव्हांजी सिस्टर थी सघे थी, तव्हांजा दोस्त थी सघनि था, तव्हांजी भेणूं थी सघनि थियूं। त दिस इज व्हाट कंसल्टेटिव रजिस्टर। कैजुअल, हाणे कैजुअल रजिस्टर कहिड़ो हूंदो आहे, रजिस्टर मीन्स लैंग्वेज। असां हिते ॾिसंदासीं कैजुअल, दिस इज द रजिस्टर पीपल यूज व्हेन दे आर विद फ्रेंड्स, close acquaintance and co-workers, family. It is probably the one you think of when you consider how you talk with other people, often in group setting. The casual छा हूंदो आहे, इहो उहा लैंग्वेज आहे जॾहिं तव्हां दोस्तनि सां गॾु हूंदा आहियो या when you are with close acquaintances, co-workers, या तव्हांजा के साथी हूंदा आहिनि जिन खे तव्हां सां गॾु कमु कंदा आहिनि, फैमिली हूंदी आहे। त it is probably the one you think of when you consider how you talk with other people. त उते तव्हां जेको आहे उन्हनि सां जेको ॻाल्हाईंदा आहियो, कैजुअल ॻाल्हाईंदा आहियो। त कैजुअल में जेकी लैंग्वेज इस्तेमालु थींदी आहे, यूज़ ऑफ स्लैंग, उते समटाइम्स असां स्लैंग इस्तेमालु कंदा आहियूं कैजुअली, कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमालु कंदा आहियूं, वर्नेक्यूलर ग्रामर इस्तेमालु कंदा आहियूं उते, माना लोकली जेकी ग्रामर हूंदी आहे, असांजी लोकल ॿोली हूंदी आहे। And people may also use expletives. Expletives छा खे चवंदा आहियूं, expletives माना जेके इस्तेमालु थींदा आहिनि, it, there, जेके फर्स्ट असां सब्जेक्ट में इस्तेमालु कंदा आहियूं, there is someone in the room, it is what it is a great day for me to be here. त इहे छा आहिनि, एक्सप्लेटिव्स आहिनि। या ऑफ कलर भी असां इस्तेमालु कंदा आहियूं कैजुअल में। हाणे ऑफ कलर असां कहिड़ी लैंग्वेज चवंदा आहियूं, दैट इज़ वेरी मच वल्गर लैंग्वेज, डेरोगेटिव लैंग्वेज वी सी हियर, अ फॉर्म ऑफ वेरी इनडीसेंट लैंग्वेज। हाणे इनडीसेंट जेकी लैंग्वेज हूंदी आहे उनखे असां कैजुअल चवंदा आहियूं, उहा कैजुअल में इस्तेमालु थींदी आहे। एग्जाम्पल असां ॾिसूं था हिते, बर्थडे पार्टी में हे जेके यूज़ेस आहिनि उहे इस्तेमालु थींदियूं आहिनि। या मैरिज सेरेमनी, slang, talking with friends, personal letter to a friend. So these are the forms where we use casual. Intimate. The linguistics say this register is reserved for a special occasion, usually between only two people and often in private. Intimate language may be something as simple as an inside joke between two college friends or a word whispered in lover's ear. And intimate असां छा खे चवंदा आहियूं, जंहिंसां असांजी घणी वेझराइप हूंदी आहे, उनखे असां इंटीमेट चवंदा आहियूं। न उहो कॉन्टेक्स्ट जिन कॉन्टेक्स्ट में असांखे, फॉर एग्जांपल असांखे अहिड़ा के माण्हू मिली वेंदा आहिनि जिन माण्हुनि सां असां जेको आहे घणी वेझराइप हूंदी आहे, त असां उन्हनि सां घणी जेको आहे घणे भाङे ते उन्हनि सां अहिड़ी लैंग्वेज ॻाल्हाईंदा आहियूं जेका लैंग्वेज सफ़ा हिकिड़े क़िस्म जी क्लोज़ लैंग्वेज हुजे, त उनखे असां इंटीमेट लैंग्वेज चवंदा आहियूं। उनजो मिसाल वठूं असां, समटाइम्स we go into the marriage ceremony, there we find a close friend and we whisper the and close friend and we talk to them intimately. वेझड़ाइप सां ॾाढो क्लोज़ली असां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं, and we gossip there. Sometimes असां ॾिसंदा आहियूं त there are two friends, जॾहिं पाण में के फ्रेंड सहेलियूं हुजनि या दोस्त हुजनि पाण में मिलंदा आहिनि, त उहे कीअं ॻाल्हाईंदा आहिनि, they often speak about others.
त उनखे असां इंटीमेट लैंग्वेज चवंदा आहियूं. Yes. So intimate language is what it is between two people or and often in private. Private में माण्हू जेके अक्सर intimately ॻाल्हाईंदा आहिनि त उन्हनि खे असां intimate language चवंदा आहियूं. Their language is very different from the language that is used in the general terms. असां ॾिसंदा आहियूं कंहिं बि शादी विहांव में असीं ॾिसंदा आहियूं त उते जेकॾहिं ॿ सहेलियूं पाण में मिलनि थियूं त उहे ॾाढी इंटीमेट लैंग्वेज ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, ॾाढी वेझराई पढ़ी लैंग्वेज ॻाल्हाईंदियूं आहिनि. समटाइम्स असां इंस्टिगेशन कंदा आहियूं, समटाइम्स असां कंहिंजे बारे में ईअं अहिड़े क़िस्म जी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहियूं त दैट इज़ वॉट इंटीमेट फॉर्म we use in different situation. Sometimes two friends can meet each other in different occasion. When they meet, they completely talk and they thoroughly talk about their recent, we can say, experiences. That is what the intimate. जेकी ॿोली असां उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं जेके माण्हू असांखे घणा वेझा हूंदा आहिनि. Slang. Slang is used by a relatively small group of people in informal situation. Slang जेकी लैंग्वेज आहे उहा इस्तेमालु थींदी आहे almost informal situation में. As it is used by a limited group of people, slang also tends to be confused with dialect. However, slang can be referred to as words, phrases, or expression used within a language. In this case, English also, slang is used by some to indicate words or phrases, expression by various ethnic or class group. It should not be used in written work unless that work includes quotes that contain slang. This category of vocabulary changes rather quickly and expressions that are in one year may be out the next year. हाणे slang language जेकी आहे, slang language असां इस्तेमालु कंदा आहियूं. It is used in informal situation and as it is used by limited group of people. अक्सर माण्हू जेके दोस्त हूंदा आहिनि अक्सर, पर कुझु दोस्त जेके हूंदा आहिनि उहे slang language इस्तेमालु कंदा आहिनि. However, slang can be referred to as words, era phrases, expression जेका लैंग्वेज में इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि उहे जेको आहे सो sometimes slang जेके हूंदा आहिनि ॾाढा confusing हूंदा आहिनि with dialects. So this is also the form here that we used to be very much clear in this regard. And in slang में the use of formal words or expression that are not considered standard in a speaker's language. Similarly, it is often used by people in a group that are familiar with it, like जीअं असां teenagers आहिनि उहे इस्तेमालु कंदा आहिनि slang language. मिसाल तौर असां slang language जो मिसाल कयूं dude इस्तेमालु थींदो आहे गाय जे लाइ. हाणे असां hey dude WhatsApp असां हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे, हिन जी माना आहे hi what are you doing. त ही जेको लफ़्ज़ आहे हे slangly is being used slangly. And there are 4 factors that most likely produced slang. And उहे हिकिड़ो मिसाल तौर असां वटि आहिनि youth आहे. One factor is youth where slang is used. The other is oppression. माना जिते ज़ालिम हुजे ज़ुल्म कंदा हुजनि उते जेको आहे slang language mostly जेको आहे सो प्रोड्यूस थी सघे थी. स्पोर्ट हुजे या अहिड़े तरीक़े सां को बि शइ थी सघे थी जिते असां जेको आहे slang इस्तेमालु कंदा आहियूं. So we use the examples here. Ride जेको लफ़्ज़ आहे अंग्रेज़ी मंझि RIDE उहो इस्तेमालु थींदो आहे कार जे लाइ. You like my new ride. हिन जी माना आहे त do you like my new car. हिते ही जेको slang लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहे राइड उहो कार जे बिहाफ ते इस्तेमालु थियल आहे. You like my new ride हिन जो मतिलबु इहो आहे त तव्हां मुंहिंजी कार पसंदि कई. साॻी तरीक़े सां let us move to the second slide. Another simple definition of slang is vocabulary that is used between people who belong to the same social group and who know each other well. माना उहे माण्हू जेके साॻी सोसाइटी सां तालुक़ु रखनि था ऐं हिक ॿिए खे ॾाढो सुठे तरीक़े सां
सुञाणंदा हुजनि. Slang is very informal language. It can offend people if it is used about other people outside a group of people who know each other well. माना हिते इहो उन माण्हुनि खे ऑफेंड करे सघे थी जिन माण्हुनि सां असांजो जेको आहे एतिरी वेझ टाइप न थी हुजे, या समटाइम्स के माण्हू जेको आहे सो न आहिनि जिन माण्हुनि में टॉलरेंस न हूंदी आहे. समटाइम्स के माण्हू स्लैंग लैंग्वेज खे न आहिनि बर्दाश्त कंदा. So we have examples here. ईमो असां जेकी ॻाल्हाईंदा आहियूं इहो इस्तेमालु थींदो आहे वेरी इमोशनल सां. ईमो मीन्स वेरी इमोशनल. दिस इज अ स्लैंग वर्ड. डोंट बी सो ईमो, योर बॉयफ्रेंड विल बी बैक नेक्स्ट वीक. हिन जो मतिलबु इहो आहे त ज़्यादा जज़्बाती ऐं ज़्यादा इमोशनल न थियो. ठीकु आहे, त ही ईमो लफ़्ज़ हिते इस्तेमालु थियो आहे वेरी इमोशनल जे लाइ. सेकेंड वर्ड इज फ्रेनेमी. हाणे दिस फ्रेनेमी इज अ वर्ड that is used someone you think that is your friend but you know is really your enemy. माना हिकिड़ो माण्हू तव्हांजे साम्हूं हिकु आहे ऐं पर पुठियां तव्हांजो दुश्मन आहे, साम्हूं तव्हांजो दोस्त आहे, त फ्रेनेमी उते इस्तेमालु थींदो आहे. माना मिसाल तौरु हैज़ योर फ्रेनेमी गॉट यू वरीड. माना दोस्त बि पर दुश्मन बि. जेके तव्हां दोस्त सम्झो था उहो तव्हांजो दुश्मन आहे. त हैज़ योर फ्रेनेमी गॉट यू वरीड तव्हांखे परेशान कई आहे छा. बाय बाय जेको टर्म आहे वो इंडियमेंट टर्म लाइ इस्तेमालु थींदो आहे. मीनिंग you have before anyone else, used between romantic partners that can also be used between close friend. हाणे बाय असां इस्तेमालु कंदा आहियूं रिलेशनशिप जे लाइ. जंहिंसां असांजी रिलेशनशिप हूंदी आहे उन जे लाइ असां बाय इस्तेमालु कंदा आहियूं लफ़्ज़. हाणे बाय असां समटाइम्स उन्हनि जे लाइ बि इस्तेमालु कंदा आहियूं जंहिंसां असांजी क्लोज फ्रेंडशिप हूंदी आहे. त बाय यू आर द बेस्ट. त हाणे हिते असां इस्तेमालु कयो आहे बाय. त बाय फेलिसिया, a fast way to tell someone go away. This term comes from the 1995 movie Friday. I know you are just copying my style by Felicia. त हिते इस्तेमालु थियो आहे कि माण्हू खे जेको आहे सो माण्हू चवे त हलियो वञ. क्वाइन लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे पैसे जे लाइ. She is about to earn some major coin. वधीक पैसो कमाइण लाइ. हाणे क्वाइन जेको आहे this is the word that is used on behalf of the money. डाइंग जेको लफ़्ज़ आहे उहो असां इस्तेमालु कंदा आहियूं समथिंग दैट वाज सो फनी. हाणे उते उन्हनि जॻह ते इस्तेमालु कंदा आहियूं जिते का शइ तमामु घणी मज़ा हुजे ऐं असां एतिरो खिलूं, हद खां वधीक खिलूं, इंटेंसली, तमामु वेरी इमेंसली वी लाफ. यू डाइड लाफिंग. हाणे हिते असां मिसाल ॾिसनि, ओ माय गॉड दिस स्टैंड अप इज हिलेरियस, आई एम डाइंग. माना हिकिड़ो माण्हू जेको तव्हांजे साम्हूं बीह करे जेको आहे मज़ाक मस्ती करे पियो या तमामु घणा जेको आहे जोक्स ॿुधाए पियो. स्टैंड अप हिकिड़ी कॉमेडी थींदी आहे. उते स्टैंड अप कॉमेडी में छा कंदो माण्हू मुख़्तलिफ़ जेको आहे मज़ा जोक्स ॿुधाईंदो आहे. त उते माण्हू जेको आहे सो खिली खिली जेको आहे माण्हू माना दंग न थी वञे त उते माण्हू इस्तेमालु कंदो डाइंग. आई एम डाइंग. epic. The epic if somewhat was epic it was highly enjoyable. Epic means highly enjoyable जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे उन जे लाइ. His latest novel was epic. इन मतलब ये तमाम जेको आहे जो सुठो हो. salty माना angry or bitter about something. कंहिं शइ जे लाइ तमामु घणो जेको आहे माण्हू तमामु घणो कावड़ हुजे जे माण्हूअ खे. why are you so salty? I said I would share if I win the lottery. तव्हांखे छो एतिरी कावड़ आहे? मूं तव्हांखे चयो आहे ऐं तव्हांखे जेको आहे जेकॾहिं खटींदुसि लॉटरी त आई विल शेयर यू. तोसां बाहिरि कंदुसि, कावड़ न कर. सो द टी हाणे हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे स्लैंगली दैट इज़ यूज्ड व्हेन समवन इज डिशिंग. त उते द टी जेको लफ़्ज़ आहे they are gossiping particularly with the juiciest and most dramatic gossip. माना जॾहिं को माण्हू डिशिंग कंदो आहे उते जेका ॿोली ॻाल्हाई वेंदी आहे उते समटाइम्स जेके सहेलियूं आहिनि या समटाइम्स जेके बि माण्हू आहिनि उते जेके ॻाल्हाईंदा आहिनि पर्टिकुलरली हिकिड़े ड्रामेटिक टॉक हूंदो आहे या हिकिड़ी juiciest या enjoyable. त उते जेको आहे उनखे असां द टी चवंदा आहियूं. मिसाल तौरु लेट्स कॉल वेंडी.
she always has the tea. हिन जो मतलब इहो ड्रामेटिक गॉसिप, juiciest. Throw shade. हाँ, throw shade इस्तेमाल थींदो आहे means to insult or say something unkind about someone. त हिन जी माना इहा आहे त तव्हां छा कंदा आहियो, तव्हां कंहिंसां कंहिंजी इंसल्ट करे छॾींदा आहियो. I can't believe he said that. He just threw someone some serious shade. इन जो मतलब इहो आहे त हुन कंहिंजे तमामु घणी इंसल्ट कया. This is the slang that is used on behalf of the word. So slang is used somewhere with some people with some context. जिथे असां मिसाल वठो teenagers, like teenagers. There are some others we can say slang words. For example, jacked. Jacked is the word that is used for stolen. And stolen, mana jack is used on behalf of stolen. Man chori jack. Chori je लफ्ज़ लाइ असां jack लफ्ज़ इस्तेमाल कंदा आहियूं. मिसाल तौर, that dude jacked my ride. That dude jacked my ride samurad इहो आहे त उन माण्हू मुंहिंजी कार चोरी करे छॾी. माना that guy stole my car. That is that there are two slangs used here. Similarly, असां kicks इस्तेमाल कंदा आहियूं. Kicks छा लाइ इस्तेमाल कंदा आहियूं? Kicks असां इस्तेमाल कंदा आहियूं shoes जे लाइ. मिसाल तौर असां चऊं था, are those new kicks? Yeah, are those new shoes? So these are what slang words that are used in language. Keep it real. Keep it real जेको लफ्ज़ आहे वो इस्तेमाल थींदा be yourself लाइ. मिसाल तौर असां चऊं था, be yourself my friend. उते असां इस्तेमाल कंदासीं keep it real my man. इते इहो इस्तेमाल थियो आहे, this is used as a slang language. money इस्तेमाल थींदो आहे high quality लाइ. And money हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको असां इस्तेमाल कंदा आहियूं sometimes high quality जे लाइ. For example, new iPad is money. इन जो मतलब इहो आहे त that new iPad is high quality. उनजी high quality आहे. त अहिड़ा जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे इस्तेमाल कंदा आहियूं असां slang language में. हाणे मिसाल तौर असां हिकिड़ा काफ़ी अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जेके असां मिसाल वठूं उहे बि इस्तेमाल असीं कंदा आहियूं. We most often use them. My bad. My bad लफ़्ज़ आहे जेको slang बि इस्तेमाल थींदो आहे mistake जे लाइ. My mistake जे लाइ. My bad. My badness असां इस्तेमाल कंदा आहियूं या my bad इस्तेमाल कंदा आहियूं. उहो इस्तेमाल थींदो आहे my mistake लाइ. त excuse me my bad. त हिते वरी इन जी माना इहा त excuse me my mistake. त this is used on behalf of the word meaning mistake. Very cool लफ्ज़ हिकिड़ो आहे उन जे लाइ असां इस्तेमाल कंदा आहियूं off the chain. Off the chain असां इस्तेमाल कंदा आहियूं very cool लफ्ज़ जे लाइ. मिसाल तौर, that new tune is off the chain. माने कि तव्हांजो जेको एक्सेंट आहे या तव्हांजो जेको आवाज़ आहे ट्यून आहे उहो ॾाढी जेको आहे उहो आहे very cool आहे. त that new song is very cool. ऐं ॿियो असां इस्तेमाल कंदा आहियूं जेके असां रिस्पेक्ट ॾींदा आहियूं त उते असां इस्तेमाल कंदा आहियूं props. स्लैंग लफ़्ज़ आहे जंहिंजी माना आहे proper respect. Props for not giving up. हिन जी माना आहे I respect you for not giving up. Props for not giving up जी माना I respect you for not giving up. असां sometimes cool जे लाइ इस्तेमाल कंदा आहियूं sick. Sick is the word that is used slangly for the word meaning cool. That concert was sick. हिन जी माना इहा आहे त that concert was cool. वो जेको concert हो तमामु जेको आहे सो cool हो. So this is the word that is used. creeper असां चवंदा आहियूं अजीब माण्हूअ खे. अजीब माण्हू weird person. उते असां इस्तेमाल कंदा आहियूं creeper. That guy is a creeper. And that guy a creeper. माने हिन जी माना आहे त that guy is weird person. ॾाढो अजीब माण्हू आहे. हिकिड़ो ॿियो लफ़्ज़ इस्तेमाल कंदा आहियूं मोस्टली swag.
swag इस्तेमाल कंदा आहियूं असां स्टाइल जे लाइ ऐं swag अक्सर अॼुकल्ह जेको आहे सो recently we see that was a trending word swag. The swag is used on style. हुनजो पंहिंजो ई swag आहे, माना हुनजो पंहिंजो ई स्टाइल आहे. So we were discussing about some slangs that are used in English. उहे जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे असां इंग्लिश में इस्तेमालु कंदा आहियूं. असां इस्तेमालु कयो पे मिसाल तौरु असां चयो पे swag लफ़्ज़ आहे उहो इस्तेमालु थींदो आहे स्टाइल जे लाइ. त उनजो तव्हांखे असां मिसाल ॾिनो. टूल इस्तेमालु थींदो आहे stupid person जे लाइ. और जेको insensitive person हूंदो आहे टूल जेको लफ़्ज़ आहे उते इस्तेमालु थींदो आहे. My sister's boyfriend is a tool. इन जी माना इहा आहे त मुंहिंजो जेको सिस्टर जो बॉयफ्रेंड आहे उहो तमामु घणो बेवकूफ़ आहे. त इट मीन्स इहो जेको आहे लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे slangly on behalf of the word that is meaning stupid. Bro इस्तेमालु कंदा आहियूं for brother. अबर इस्तेमालु कंदा आहियूं ultimate जे लाइ. The new car is अबर cool. इन जी माना इहा त the new car is super cool. असां attractive लफ़्ज़ जे लाइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं hot. साॻी तरीक़े सां बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जे लाइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं boo. BOO. That is slangly used for the word boyfriend and girlfriend. या badass. असां badass इस्तेमालु कंदा आहियूं BADASS. That is the word that is used for ultra cool person. जेको तमामु घणो cool person हुजे. सुठे मिज़ाज वारो माण्हू. That guy is totally badass. माने तमामु घणो cool आहे. माने असीं जिते इस्तेमालु कंदा आहियूं इन माण्हू सां दंग थी वियो आहे. ॾाढो ग्रेट माण्हू आहे. त उते असां इस्तेमालु कंदा आहियूं badass. So these are the words that are used slangly.